Tari gate. No smoking inside. That's good. Ticket window. Thank God I didn't. I did book that ticket, so there is no chance of waiting. There's a wax museum, but I really don't have time. Maybe next time. This Mahal. Piece of architecture building numbers 44 stones. Okay. ये अलाउ नहीं है। सबसे बेकार फोटो देखे बेरोला রাজাতে হানিমুন স্পট দেখতে গেছি হানিমুন স্পট তো রেকর্ডিং করাই আছে শোনা যাবে something happening here I have to take the video and they don't allow handicaps over here. It's 20,000 bucks you have to pay because people, the main reason is that people are using it for commercial purposes. So tourists like us are getting. So this is Mehrangarh Fort. Drinking water. I don't want to drink water now. So I just want to walk down. Try to save battery as much as possible. Collecting rainwater coming to the tunnel lead up to hills of Mehrangarh. Okay, so this is the rainwater. I think I can see a fish over there as well. Is it a fish? I don't know. There's an awesome view of the Jaipur city. I was just looking at this fort from that place. Now I'm here. Really is beautiful feeling. Okay, but I'm not going down to touch the water. What I'm going to do is that I'm going to ask the fort to see the fort more. Try to save as much battery as possible. बुलाने गए थे वैसे आवाज मारी थे चल भी रहे थे फिर निकला एक फोटो ठीक है अरे किसको उसको बैठा दो वो छोड़ दो अच्छा बाल्टी को चलो ना पार्टी जी पहाड़ पे से कुत्ते दे रहे हो Two of them. This side and this side. सूचना भी मेरे को नहीं चाहिए something very stupid. So, I am in the fort of Mehrangarh.
Probably there will be things written here helping me out. Something in 1988, I don't want to even look at it. What is this rock for? सर जी ये किसके लिए है? ये किसके लिए? The steps now, hopefully to get somewhere. Again using, okay, there you can see someone having fun. Way to terrace. So I'm approaching the top of the fort. See some pigeons. Ako bisa ka na boलणार. That part is a Muslim area, is a palace. The garden lake is a royal section. That is a garden, also royal section there. Is a city palace area as you have seen yesterday. Just next to Jantar Mantar. Yes, this one. It's vast tower. Yeah, vast tower. You can see inside the pink private audience hall. This opposite is a public audience hall here. Palace is there. So that is a royal section is there. So it's a main street here. Tomorrow you go this side. Is at airport. At airport you'll cross the old city or you can see. This is the best one. Yes, terracotta, pink city. Only the side, the facade is a painted. वो क्या है? वो सीधे जो पहाड़ के ऊपर है वो भी किला है सर, किला है। वो क्या नाम है? वो आई थिंक मैं याद नहीं है नाम, लेकिन किला वो खुला नहीं है पब्लिक के लिए। वो भी किला है, मोती डूंगरी फोर्ट बोलते हैं उसको। उसको राजा राम या सर राजेंद्रगढ़, हाँ राजेंद्रगढ़, राजेंद्रगढ़, लेकिन वो पब्लिक के लिए नहीं खुला है। पब्लिक के लिए नहीं खुला है। I'm walking on the terrace here. संजय की बात तो उधर ही। संजय की बारात तो फर्स्ट तुम्हारे आ गई। हाँ यहाँ तक आए थे, तो यहीं से वापस वो रोड से चल रहा है। हम ये घूम के तो ये निकल गए। Thank God I bought this phone because this stupid rules in Rajasthan. Take videos.
some good scene. There's a cafeteria there, so it's not a historical thing. Like I really am quite upset up to now. There's not much written here. I'll use my video camera. I don't know where you are. This you can see, okay, I think you can go like this all around, and the stone color is also, but it's not Jaisalmer, so but it's very yellow stone. Mehrangarh. And currently I'm back to the same place, I think. सर जी, यहाँ पे लिखा क्यों नहीं रहता है? क्या होता, क्या है ये, किस लिए है, ये क्या है? लिखा हुआ नहीं है। हाँ, really upset with how they handle things. And I'm out here again. Where to the terrace? I've already been there, so I must start going down. Exit. Okay. Now I didn't go to that part because of those two having fun. Let me have a walk around. And it's the same. So here. Something for 2017. एक राजा है, उसके 9 रानियां हैं, उन 9 रानियों के 9 महल है ये। अच्छा, तो एक एक महल जो मैं घूम रहा हूँ एक एक रानी का है। एक रानी का है, ये पूरा पोर्शन एक रानी का है। अच्छा, अभी समझ में आ रहा है ये कैसे क्यों बना हुआ है ऐसा। हाँ, ऐसे 9 है। अरे ये राजा के महल से कनेक्ट है 9 में। राजा का महल कौन सा है? राजा का महल दूसरा। तो एक एक दिन राजा एक एक रानी के पास जाता था। सामने से वो वाला। अरे वो उधर बिल्कुल इधर पे। आगे से नीचे उतरना है। अच्छा, और यहाँ पे कोई युद्ध का हिस्ट्री जानते हैं? कोई युद्ध का हिस्ट्री, लाइक वॉर का हिस्ट्री? वो गाइड ही बताएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं थोड़ा, अगर जो जानेगा थोड़ा सा बोल दीजिए, मैं सुन लेता हूँ। यहाँ युद्ध है नहीं, ये माधो सिंह जी का महल है। हाँ, राजा माधो सिंह है, उसका महल है ये। अच्छा, उसके 9 रानियाँ थी, उसकी महल है, उसने बनाए। 2 है मेन पटरानी, बाकी 7 वैसे। अच्छा, जो मेन पटरानी है उसका बड़ा है। अच्छा, वो वाला डबल है वो, जैसे ये सिंगल है तो उसके डबल है। अच्छा, ये समझ गया। बाकी सेम है। कोई सा भी एक देखो तो ये एक्चुअली एकदम सच में बोलने के लिए राजा के हनीमून स्वीट थे ये।
हाँ ये रेजिडेंस नहीं है, ये हनीमून स्वीट है, जुत करने भी है नहीं। नहीं ये ये सिर्फ एंजॉय करने के सिर्फ- पर्पस है, या सेफ्टी, हाँ। कभी इमरजेंसी में जा रहे हैं तो सेफ्टी के लिए हाँ, ये है, मौज मस्ती के लिए, मौज और मस्ती safety के लिए जैसे हनीमून स्वीट। हाँ ये मानो ये। हाँ। बाकी मैं तो सिटी पैलेस रानी बात कर सके। अच्छा, ये रानियों का कॉरिडोर है, ये ये connect है। कनेक्ट है, और ये है राजा का कॉरिडोर है, कनेक्टेड है। सो ओनली राजा कैन, सिर्फ राजा ही यहाँ से आ जा सकते हैं और कोई नहीं। और ये सारे गेट बंद रहते हैं, जिस रानी के पास जाएगा उसी को पता रहेगा, उसके अलावा आपको पता नहीं चलेगा किसके पास है। अरे बाप रे, ठीक है? ये अब मेरे गाइड तो मेरे को यही बताता, यही बताया था, लाइक बताता था। ये नहीं, ये मेरा यादगारी के लिए, ये 5 साल जब बुढ़ा हो जाऊंगा ये सब याद रहेगा ना। हाँ, इधर कहाँ लगा हुआ है? ठीक है, इसी पे हाँ। कहाँ लगाना लगा के लगाओ। हाँ, आई कैन हियर, मैं सुन सकता हूँ आपकी बात। ठीक है, आई आवाज़। हाँ, हॉलो है ये दैट मीन्स ये पूरा, इसमें आवाज आता है इधर से उधर। हाँ, और ये हॉलो है। ये अच्छा, सिर्फ दो ही जगह है, एक तो यहाँ है, ये चित्तौड़ के गढ़ में, ये 2 किलो में है, या चित्तौड़ के किले में या इस नाहरगढ़ के किले में, बाकी कहीं नहीं है। ये दीवार की खान, दीवार से बात कल तो मैं चित्तौड़ जा रहा हूँ। Have enough of the honeymoon suite of the Raja Maharaja, and I really didn't like it. I like the place. It is just made for Raniyo ke liye. It's not for any other historic purpose or anything involved over here. So I'm going out. I'm leaving the place as early as possible, so that I can visit some more. Okay. So here lies my Mehrangarh Fort. का visit. The best thing I could have done here is use the public toilet. এটা গুরু করছিল যাকে টয়লেট অতটা নোংরা নয়। So I'm leaving this place now and going to Amer. ये जो रास्ता है, ये रास्ता एक्चुअली नहीं, पहले नाहरगढ़ का यही रास्ता था ना, जो पैदल जाता था, यही था। यही सोनार केल्ला में এখানেই এ করে দিয়েছিল। यही होते से नाहरकेल्ला रास्ता। अच्छा हुआ यहाँ पे खड़ा था, क्योंकि रास्ते को मेरे को देखना था। I didn't go to the Mehrangarh Fort, otherwise I would miss Amer, the main fort over here. It's already 4 o'clock and I'm traveling from the morning. But the thing which is there is, this is the world's largest cannon. So I don't know with what respect they call it the largest cannon. And another information I got about that fort is still owned by the Rajas. So the ticket I bought, the combined ticket of all the forts, will not back over there. ये है कि जयगढ़ फोर्ट। वो किला वाला जो है सामने, वो है, दिस इज अमर फोर्ट है, दिस इज अमर फोर्ट। और दिस इज द जयगढ़ फोर्ट।
the biggest cannon in the world. And you see the area that cannon is. This place is awesome. और वो वॉल बोला किसके लिए वो वॉल है? वो जो दीवार दिख रहा है ना, हाँ वो वॉल राजा की प्रॉपर्टी है ना, इसलिए। वो राजा के प्रॉपर्टी, क्योंकि ये जयगढ़ फोर्ट तो अभी भी राजा की ही है। हाँ, तो ये जो जमीन है ये राजा की है सब राजा की। अभी तक। बाकी इधर का पिंक सिटी भी राजा का ही है। राजा का ही है। That's a good information. और वो फिर वहाँ पे नहीं वो कौन सा फोर्ट है? वो भी सब राजा का ही है। 4:30 हो गए, जल्दी आ जाओ, 5 बजे तक ही देखने देते हैं आमेर फोर्ट। चलो। Mr. Beautiful Peacock, but we are rushing in time now. We are really rushing in time. As usual. Finally in the Amer Fort, and I know these bloody people won't allow me to take the video of inside. So I am just taking it from outside. Awesome. जितना ले सकूं. आम्ही नव्हती सांगितली, आम्ही पण दुपारी तुमच्या 2 अडीच नाही म्हणूनच म्हणते. तीच म्हणते रिक्षात मला. अरे आधी मला तुम्ही सांगायचं ना फोनवर मला की ते 5:30 ला बंद होणार आहे. चला किसी कारण इसका नाम nice, amazing. अभी तो मुझे ऐसा लगता है They are still flying there. And with the jib. And definitely, I'm pretty sure they will be coming up with their funny stories about video cameras and other stuff. अंदर ऐसे ही जाओ. अंदर ही जाओ. हर पार्ट में एन होता है. अच्छा. 2 पार्ट हम दिखाएंगे, तीसरा पार्ट गाड़ी से दिखाएंगे, हाँ. और पहला पार्ट दीवाने आम दीवाने खास वो आपको देख के आना पड़ेगा. वो कितना दूर है? वो सर ये है ना, दीवाने आम दीवाने खास. ये दो. हाँ तो इसमें क्या है, इसका हिस्ट्री बता दीजिए. हाँ बता. बताइए ना. तो समझ लो, मुझे रात दीवाने खास समझ लो. तो पैसे की हाँ बोलिए. देखिए सर, जो यहाँ के दीवाने हम. हेलो निचान क्या? ओके, थैंक यू वेरी मच. अभी एक गाइड चाहिए मेरे को. It is not a bad opening. I can use my video camera, but I cannot use a stand. I'm happy with that. I'm quite happy with that. So this is, I'm entering Chittorgarh. Sir, oh, fuck it, Amber.
And as usual, in India you will see lots and lots of people everywhere. बोलिए। आरपी मीणा हाँ, पूरा दिखाएंगे ना एकदम? हाँ पूरा ही दिखाएंगे आपको। ठीक है। आपका गवर्नमेंट का कार्ड है? हाँ, तब भी हाँ। So I am lucky, I must say. I'm thankful to him, and I'm thankful that I'm going to get the video of the best place of Jaipur, which is called the Amer Fort. ये है सर हाँ। राजा मानसिंह टाइम का 16th सेंचुरी का मंदिर है, काली 16th माता century। शिला देवी का। अच्छा हाँ, एक बार प्रणाम करके आते हैं। फोटोग्राफी अलाउड नहीं है अंदर ले जाए तो मैं बंद कर देता। हाँ, जो हाँ हाँ हाँ, डोंट किल हिम, सो स्वीट। सामने मंदिर आप लोग देख रहे हैं 16th सेंचुरी का। 16th century। राजा मानसिंह की फर्स्ट लेकर आए थे माता जी को पूर्वी बंगाल से 1646 में आमेर में, और फर्स्ट में माता जी को मनुष्य का बलि चढ़ा करता था। मनुष्य का बलि, मनुष्य के ह्यूमन आदमी का बलि शुरू के अंदर। उसके बाद में जब बफेल होता है उसके पाड़े का बलि चढ़ने लगा, और उसके बाद में अब रोज एक बकरे का बलि होता है, एक शराब का बोतल चढ़ता है। जो राजा की फैमिली रहती है सिटी पैलेस, हाँ, उनकी तरफ से एक बकरा एक शराब का बोतल रोज एवरीडे प्रत्येक दिन मॉर्निंग टाइम सुबह। अभी हाँ अभी पूछ सकते हैं आप इनसे भी, अभी ये ट्राई कर सकते हैं कि होता है कैसा। कि कितने बजे होता है? सुबह 6 बजे सुबह के टाइम। अभी आप देखते दर्शन करते आपको पता लगता माता जी का मूर्ति में टेढ़ा हो रहा है थोड़ा। मेरे को एकदम पसंद नहीं, क्योंकि बलि चढ़ाना मेरा पसंद नहीं। गुस्से और नाराजगी की वजह से पहले आदमी का बलि हुआ करता है, बाद में बफेलो इसके पार्टी का, बाद में बकरे का। तो गुस्से और नाराजगी की वजह से माता जी का मुंह टेढ़ा हो रहा है। जो इस टाइम इसकी पूजा करें बंगाली लोग, जो किले का नीचे का हिस्सा दिख रहा है उनको रहने के लिए राजा ने वैसे ही दे रखा है। ये कहाँ पे? हाँ वो जो गेट जो दिख रहा है अंदर एक नजारा भी 16 के सिल्वर का नजारा, 16 किलो सिल्वर। अब आ गया। Beautiful. This is why I'm so tired, why I'm so doing these things. I'm so grateful. ये ले लो। This is called, अब ये बोला नहीं मेरे को। आप बोले नहीं वहाँ पे जो अनाउंसमेंट था वो सब बताएंगे ऊपर। सिंह पॉल गेट। ओके, टिकट चेक करो अपना। ओके, हाँ बोलिए। इधर गाइड का पहले एंट्री होता है, आप कर दीजिए एंट्री। गवर्नमेंट गाइड जब भी अंदर जाता है, हाँ। जो ऑथराइज्ड गाइड होता है वही। ओके, so here is my government guide and he's entering himself. Somehow I am lucky, I told you. Wow. हाँ, यहाँ से तो फोटो लेना है पहले। आप पहले मेरा फोटो लीजिए, रुकिए। मेन इज द वीडियो, आप बोलिए। सामने चाइना हॉल की तरह बाउंड्री वॉल लग रहा है। हाँ, ये राजाओं के आइए इधर, आइए इधर। लिए बनाया गया सुरक्षा के लिए। अच्छा, ये बाउंड्री वॉल है, चारों तरफ है किले की सुरक्षा के लिए। 12 किलोमीटर में सारा बाउंड्री वॉल 12 किलोमीटर में। आप एक बात बताइए, ये तो अभी इंडिया के अंदर ही है, तो इसको अभी क्या किसका सुरक्षा चाहिए? इस आमेर फोर्ट की सुरक्षा के लिए था, सैनिक वगैरह बैठते थे ऊपर। टावर दिख रहे हैं ना, वॉच टावर, इन पे सोल्जर्स राजा की टाइम। ये तो पुराने टाइम में। हाँ, पुराने टाइम की तो बात बता रहे हैं। हाँ, अभी नए टाइम की तो अभी तो होम गार्ड्स हैं। हाँ, ये वही तो ये बता है, रहा है। पुलिस है। ये सामने सूरज पोल गेट की है, चांद पोल गेट है। सूरज पोल इसलिए लगाता है, राजा के टाइम जो राजा का रॉयल फैमिली था, हाथी और घोड़ों से नीचे से इसी गेट से आया करते थे। इसका नाम है सूरज पोल गेट। गांव के गरीब लोग जोर से बोलिए ना। गांव के गरीब लोग बाग थे, मध्यम श्रेणी के लोग बाग ये छोटे गेट से आया करते थे, चांद पोल गेट से। तो इसका नाम है चांद पोल गेट। इस पूरे ग्राउंड को बुलाता है जलेब चौक।
जलेब चौक। राजा महाराज के टाइम में राजा के सोल्जर सैनिक वगैरह मैदान के अंदर परेड करते थे, परेड मैदान। पीछे जो आमेर गाँव आमेर सिटी दिख रहा है बैक साइड में, पहले ओल्ड जयपुर पुराना जयपुर यही था। जयपुर सिटी बाद में बसा है, पहले ओल्ड जयपुर पुराना जयपुर यही था, जयपुर बाद में बसा है। ये है तो आप पीछे आओ। अच्छा, दरबार कहाँ बसते थे? क्या दरबार कहाँ पे? यहाँ से शुरुआत करेंगे। अच्छा, राजा का सिंहासन होता था बीच में, आम पब्लिक लोकल पब्लिक आउटसाइड। सॉरी एक्सक्यूज मी। चल, ये दीवान है आमेर पब्लिक ऑडियंस। पब्लिक ऑडियंस। राजा का सिंहासन होता था बीच में, आम पब्लिक लोकल पब्लिक आउटसाइड बाहर। अच्छा, तो रेड कलर में पिलर दिख रहे हैं, रेड कलर में हाँ, यह है राजपूत शैली से संबंधित, राजपूत शैली। अच्छा, और वाइट कलर में दिख रहे हैं मुगल शैली, मुस्लिम मुगल शैली से संबंधित है। क्योंकि यहाँ पे अकबर आए थे जोधाबाई से शादी करने के लिए, जिसका आगरे में लाल किला बना है। तो जोधाबाई को यहीं से शादी करके लेकर हेलो, आगरे में लाल किला बना है। इतना चिल्लाते क्यों हो लोग आप लोग? धीरे धीरे बोलो यार, स्लो स्लो भाई साहब, स्लो। इट्स अ हिस्टोरिकल प्लेस। अब आइए आगे। रुकिए भैया, रुकिए। यू आर इन अ हिस्टोरिकल प्लेस, यू मस्ट कीप साइलेंस। आहिस्ता आहिस्ता बात करो सो यू कैन फील द प्लेस। रुकिए, इसका फोटो लेना है। गेट को बोलते हैं गणेश पोल गेट। गणेश पोल गेट। जैसे अपने मैन घरों के गणेश जी विराजमान होते हैं, उसको शुभ माना जाता है। गणेश जी की आपत्ति और बाधाओं को दूर करने के लिए जाने जाते हैं। पहले राजा लोग जब युद्ध करके वापस आया करते, रानियाँ उनका वेलकम किया करती थी। इसी गेट पे विंडो से फ्लोर से वगैरह डालती थी ऊपर से। I just saw रानी सामने ना। मार्बल का जाली दिख रहा है ऊपर, हाँ, इसको बोलते हैं सुहाग मंदिर। सुहाग मंदिर। रानियाँ अंदर बैठकर जाली पे पतली चुन्नी का पर्दा लगा के, यहाँ पे नीचे डांस प्रोग्राम होता था, उसको देखती थी रानियाँ सुहाग मंदिर में बैठकर। जितना भी कलर पैंट देख रहे हैं, हाँ, यह है सारा वेजिटेबल कलर, नो केमिकल, ओनली वेजिटेबल कलर। जैसे गुड़, मेथी, बथुआ, पालक, नारियल, इन चीज़ों को मिक्स करके ओरिजिनल कलर किया जाता है। पानी से साफ करो, ख़राब नहीं होगा। इधर का इसका होता था रसोई घर, किचन, रसोई घर। अच्छा, ये सब ऊपर जो जालियाँ आपको दिख रहा है नीले कलर में, ये था डाइनिंग हॉल। डाइनिंग हॉल। अच्छा, जोधा अकबर मूवी देखा आपने? हाँ, देखा देखा। ऐश्वर्या की दौरा खाना बनाते कड़ाव में दिखाया जाता है। हाँ, हाँ, हाँ। पानी का मटका वो आपको आगे मैं बताऊंगा। और ऊपर वो क्या है? वो तो छत है, इसका ऊपर का छत है। अच्छा, नहीं, ये तो रसोई घर, ये राइस रसोई, ये खाने डाइनिंग हॉल, वो क्या है बीच में? छत है, इसके ऊपर का छत। ओ, ये जस्ट छत है। हाँ, ये गणेश पोल गेट का जो हिस्सा है ना पूरा। अच्छा, अच्छा। चले आगे। हाँ, हाँ। फोटो थोड़ी लेंगे यहाँ से, फोटो लेंगे आगे। फोटो तो लेना है। इसमें अंदर लकड़ी है, इसके अंदर। पेंटिंग आप लोग देख रहे हैं, ब्लॉक पेंटिंग। हाँ, हाँ। इस पेंटिंग्स में येलो कलर दिख रहा है, इसको गोल्ड पॉलिश किया गया, सोने का पॉलिश। यहाँ भी पेंटिंग्स में येलो कलर दिख रहा है, येलो कलर। पेंटिंग में येलो कलर है, इस पर गोल्ड पॉलिश है, सोने का पॉलिश, रियल जामेस स्टोन। चलते दीवाने खास। अच्छा, दीवाने खास का मतलब क्या है? दीवाने खास का मतलब है राजा रानी का बेडरूम। ओके, खास। अच्छा, दीवाने खास। ओके। आम का मतलब लोकल पब्लिक सभी उसमें। अच्छा, ये भोजनशाला है पूरा। अभी गेट था ना, गेट क्लोज था, ये पूरा भोजनशाला इधर पहले ओपन था, क्लोज। अभी तो कोई खाता नहीं, आपको यूज ही नहीं आता। गरीब लोग को खिला सकते थे। क्या ये देखिए, इस पूरे पार्क को बोलते हैं दीवाने खास और सुख मंदिर। अब बोलिए। दीवाने खास और सुख मंदिर। गर्मी के मौसम में राजा की फैमिली बैठती है, गर्मी में चलते हैं कूलर पंखे। वैसे भी एक नेचुरल ऐसी लगा है, ये मार्बल का जाली होता है, उसमें छेद होते हैं बाहर से हवा आने के लिए, गहरे छेद। ऊपर टैंक होता है, टैंक से जैसे पानी नीचे आता है, उन छेदों से हवा आता है, हवा के माध्यम ठंडा जो एसी का काम करता है, जो आपको आगे बताता है। वो इसमें भी है ना? हाँ, एक ही पार्ट है इसमें। हाँ, नहीं, मैं बता रहा हूँ लखनऊ में। लखनऊ में भी है ना? हाँ, सेम नेचुरल एसी। ये रानी का व्हील चेयर, पालकी होता है ना, रिक्शा गाड़ी, हाँ, जिसमें रानी बैठती थी और रानी को उठाकर उसकी दासियाँ किले के अंदर घुमाया करती थी। अंदर जो गेट देख रहे हैं वो चंदन की लकड़ी का गेट है, जो पुराना डैमेज हो गया, अंदर वाला गेट। अच्छा, मैं
और इतना रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ये तो सफ़ेद स्टोन है सर। फोटोग्राफी को तो मन जाना है तो ट्रेंड सर बोलिए की बात बोलिए। दिस इज ये तो वाइट मार्बल है। ये मार्बल नहीं है सर, ये पीओपी जो मार्बल का पाउडर होता है ना, पाउडर। अच्छा। ये वो है, मार्बल तो नीचे है। हाँ। ये मार्बल है, ये मार्बल है। लाइक ताजमहल जैसा बना है। हाँ। अब ये देखिए, पहले इसको देखते हैं अंदर क्या है। नेचुरल ऐसी जाली दिख रहा है, जाली मार्बल का। अब देखिए। हाँ, ये जाली, ये वाला नीचे छेद दिख रहे हैं, उजाला दिख रहा है जाली में नीचे, बिल्कुल डाउन साइड नीचे दिख रहा है ना उजाला। इन छेदों से हवा आता है, दिख रहा है उजाला आपको। इन छेदों से हवा आता है। ऊपर टैंक होता है, टैंक से जैसे पानी नीचे आता है, उन छेदों से हवा आता है। हवा के माध्यम ठंडा हो जाए, ऐसी का काम करता है। उसका वेस्टेज पानी नाली है नीचे, इससे निकल कर इस गार्डन में चलेगा, मुगल गार्डन। इधर से हवा आती थी। तो पानी तो अगर वहाँ पे चला गया, पानी वहाँ पे पानी गार्डन में। हाँ, तो पानी में पेड़ पौधों के लिए यूज़ किया जाता था। अच्छा। और ऊपर छत में देखिए कड़े लग रहे हैं, छत में आयरन। हाँ हाँ। इनमें क्या होता था, पहले सावन और भादों में रानियों के लिए यहाँ पे झूले लगते थे, सावन भादों में झूले। हाँ। और शीशे का नाली ओपन था, जैसे नाली में से पानी चला करता था, रानियाँ खुद के पैरों को पानी में चलाया करती थी और शीशे के अंदर खुद की परछाई को देखा करती, चेहरे को। वाओ वाओ, दैट इज कॉल्ड राजरानी। ये चंदन की लकड़ी का गेट है, जिस गेट में बोलिए ये कौन सा फूल है? तो वैसे ही पेड़ पौधे शो के लिए नहीं, ये सब प्लास्टिक का है। नहीं, ओरिजिनल है। हाँ, प्लास्टिक तो आप नहीं। क्या शो के लिए क्यों बोल रहे नहीं, हैं? वैसे जैसे चमेली मोगरा वो चीज़ें नहीं है, हाँ। नॉर्मल चीज़ें। अब देखो सामने पीछे चंदन की लकड़ी का गेट है। गेट में वाइट कलर में डिजाइन दिख रहे हैं आपको। ये डिजाइन है हाथी दांत से बनाया गया, आइवरी का काम। इन डिजाइन को देखिए, गार्डन में पेड़ पौधों का डिजाइन तैयार किया गया। ये डिजाइन है, इन्हीं डिजाइनों को देखकर पूरे गार्डन में पेड़ पौधों का डिजाइन बनाया गया, जिसको राजा रानी का बेडरूम कहते हैं। ये डिजाइन है सामने, सेम पैटर्न पीछे पूरे गार्डन में पेड़ पौधों का डिजाइन तैयार किया गया है, जिसको राजा रानी का बेडरूम कहते हैं। अब अपन चलेंगे सामने शीश महल। अच्छा, एक मिनट रुकिए। अच्छा, यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे कोई बड़ा युद्ध का कोई हिस्ट्री है? युद्ध नहीं हो यहाँ पे कभी नहीं हुआ ना? अकबर का रिलेशन हो गया ना यहाँ पे। हाँ, शादी हो गया जोधा से, जोधा भाई। कभी युद्ध नहीं हुआ, हिंदू मुस्लिम में कभी युद्ध नहीं हुआ। एक बार राइट टर्न। इस साइड है मानसिंह पैलेस, पहले शीश महल चलेंगे, बाद में मानसिंह पैलेस, ठीक है? पहले शीश महल। Yes, this side, exit. भैया एक मिनट, क्या वो कैमरा दो। सो दिस इज ऑसम लाक। वो महल का ऊपर का नाम क्या है? वो है ये नीचे ठंडा शीश महल है, वो गर्म है। वो गरम शीश महल है। वो क्लोज अभी, क्योंकि इसका रेनोवेट किया जा रहा है, काम चल रहा है। अच्छा, तो गरम शीश महल के पास में मेरे को क्या दिखाई दिया? This is luck. You can say only this is luck. चाँद का अभी भी उठना था। यस सर। तो ये क्या है? ये अपना ही बताया। बताएंगे ना, अभी स्टार्ट करेंगे। अच्छा। वाओ, ये बताइए, स्टार्ट करें। हाँ, इसको बोलते हैं सर शीश महल। शीश महल में जो शीशा यूज़ किया गया, शीशा लाया गया था बेल्जियम। राजा ने जितना भी शीशा यूज़ किया गया था बेल्जियम से मंगवाया था।
पहले इसके अंदर ले जाकर दिखाया करते थे, एक चिमनी या मोमबत्ती जलाकर अंदर ले जाकर दिखाते हैं, चारों तरफ रोशनी और सितारे नजराते हैं, मतलब रिफ्लेक्शन होता है, चमकता है। मुगल आज़म मूवी देखा, मुगल आज़म, हाँ जो फर्स्ट में ब्लैक एंड बाद में रंगीन किया गया है, जिस मूवी के अंदर जो सी स्मेल दिखाया जाता है, उसी सी स्मेल को, इसी को देखकर उसका ढांचा तैयार किया गया था सी स्मेल का। पहले राजा और रानी अंदर बैठते थे, अभी झरोखे के सामने सोफे और गद्दे लगे होते, राजा रानी सी स्मेल के अंदर ही बैठते थे। इसका एक कारण ही गर्मी में ठंडा रहता है और सर्दी में गर्म रहता है, क्योंकि चूना है, चूने के अंदर जो गुड़ होता है रेड कलर का, वो सॉरी ब्लैक कलर का, उसमें मिला के यूज़ किया गया ताकि गर्मी में ठंडा रह सके और सर्दी में गर्म रह सके। और जैसे एक कैंडल जलाते हैं सारा शीशा चमकता है, उससे भी गर्म होता है। ये अब आप फोटो ले लो फिर चलेंगे। और यहाँ पे पहले ये सामने, हाँ सामने ये फाउंटेन होता था पहले, फाउंटेन। अच्छा समझ गया। तो आपको एक बात बताऊँ, वो जो पानी आता था ना, ये फाउंटेन से रिसाइकल होता था। नहीं, ये फाउंटेन कैसे चलता था, पहले जो पीछे एक तालाब है माउटा लेक, अच्छा तो उसमें से पहले पशु बलि के माध्यम से यहाँ पे पानी लाया जाता था, पशु बलि के माध्यम से छत के ऊपर, उसी के माध्यम से घूम रहे, कोई बिजली का सिस्टम नहीं था पहले। वही तो बात है, हाँ, मेरा बात है कि फाउंटेन अगर चलेगा ना तो कंटिन्यूअस तो चलना चाहिए, तो मोटर नहीं है तो चलेगा कैसे? ऊपर जो छत के ऊपर वो पानी इकट्ठा किया था उसी के प्रेशर से, उसी का प्रेशर से, वही और मैं वही सोच रहा था कि शायद वो पानी इधर। ये राजा रानी का बेडरूम है, समर पैलेस एंड विंटर पैलेस। समर पैलेस एंड दिस इज विंटर पैलेस। समर में उसको यूज़ किया जाता है बेडरूम के रूम में, और विंटर में इसको बेडरूम के रूम में यूज़ किया जाता है। ये राजा जयसिंह का पार्ट है, राजा जयसिंह। हाँ वो सब किया था। हाँ? कितना बीवी था? एक ही था? 2 बीवी था उसका। हाँ 2 बोला था। 2 बीवी सामने, 2 बेडरूम उधर, 2 बेडरूम इधर। इधर आओ मैं दिखाऊँ बेडरूम आओ। रुक पहले फोटो ले लेते हैं। गेट दिख रहा है बिल्कुल कोने में अंदर, आप यहाँ पे देखो ना, ये गेट अंदर है, ये दिख रहा है ना, यही गेट है बेडरूम। एक ऐसा भी इधर है, उसको बेडरूम, 2 बेडरूम है इसमें, एक इस कोने में दिख रहा होगा। मैं जूम करता हूँ, देखो आप देखिए, ये दिख रहा है ना। तो नानी होने का झगड़ा होने नहीं होता था, इतना पास रहते थे, अलग अलग होता था उनका सिस्टम सब। ये तो इसके 2 ही रानी थी, अभी राजा मान सिंह के पास चलेंगे, उसकी 12 रानी थी, 12 वाइफ। आप ये कैसे संभलते थे? ये आपको वहाँ बताएंगे, वहाँ का अलग सिस्टम है। Sure. This is what you call wealth. And this is what you call exploitation of normal person. Exploitation of people to make their own wealth. हाँ इधर हो गया, उधर क्या है? पहले चले उधर से आने का रास्ता, जैसे अपना है ना इधर से, हाँ उधर से वो इधर से भी आ सकते थे अपन, उधर से थोड़ा देख के आते हैं। वो चलिए। देखो ना, राउंड लगाओ। Unfortunately, the guy doesn't know me. I keep an eye open on everything. So this is the beautiful Swiss Mahal. I want to zoom it to the end to see. Oh. Definitely, if I was the king, I would have a हाँ ऑडियो गाइड। नहीं इसका ये हाँ 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 मार्बल के ऊपर शानदार चीज़ है। इसका फोटो लीजिए ना। This is another entrance. थोड़ी मार्बल है, 400 साल पुराना मार्बल, मकराना मार्बल। ये है ना? जाने दीजिए। ये मुगल गार्डन है, जोधा मूवी का शूटिंग जो होता है, जोधा अकबर। जोधा ये पता नहीं।
अभी ये कहाँ जा रहे हैं हम लोग? मानसिंह पैलेस, हाँ, मानसिंह महल। मानसिंह में। ये देखिए आप लोग, रानी का स्विमिंग पूल, वाटर, जाकूजी, गड्ढा है नीचे छोटा सा, स्टोन के नोजल होते थे, फाउंटेन। हमारी चला गई रानी आसमान की थी, पहले ओपन नहीं था, पर्दे का सिस्टम होता था। अच्छा, यहाँ ये ऊपर यहाँ पे पर्दा होता है। अभी बीच में आ जाओ, मानसिंह है। ये मानसिंह महल। और अरे वो- अभी हाँ, पूरा स्टोरी बताएंगे आपको यहाँ से। हाँ। इसको बोलते हैं सर मानसिंह पैलेस, पूरे पार्ट को। अच्छा, शीश महल एक अलग पार्ट था, मानसिंह पैलेस अलग पार्ट है। बीच में देख रहे हैं सामने, हाँ, इसको बोलते हैं मानसिंह पैलेस की 12 दीवारी, जिसके चारों तरफ 12 गेट है, 12 गेट। इसको लेडीज़ का दीवाने आम भी कहते हैं, लेडीज़ का दीवाने आम, जिसमें रानी वगैरह उसकी दासियाँ बैठ के मीटिंग किया करती थी। लेडीज़ का कोई भी बात होता था, यहीं बैठकर सलाह मशवरा किया था लेडीज़ का। राजा मानसिंह की जो 12 रानियाँ थी, 12 वाइफ, उनकी रूम में लगातार आगे से आगे तक 12 रानियों की 12 रूम। यहाँ पे हाँ, नहीं, ऊपर बताएंगे, देखो इधर अच्छा, अच्छा। 3 इधर, 3 इधर, 3 इधर, 3 इधर, 12 रानियों के 12 रूम। उनकी रानियों के कुछ ऐसे नाम थे जैसे श्रृंगार हृदय, कनकावती, ऐसे कुछ अलग अलग नाम थे। पूरे किला बना था 18 नवंबर 1727, 18 नवंबर 1727, 1727। 3 राजाओं ने मिलकर इसको तैयार किया, राजा मानसिंह, जयसिंह, सवाई जयसिंह। इसको बनने में 137 वर्ष लगे, पूरे किले को डेवलप होने में 137 वर्ष। एक ही राजा नहीं बना, थोड़ा किसी ने मिलकर तैयार किया। अलग अलग राजाओं ने अलग अलग टाइम में, मतलब 3 जनरेशन ने मिलकर तैयार किया। पहले राजाओं के अंडर में था, राजा मर्यादा सुरक्षा नहीं कर सके, फिर ये गवर्नमेंट के अंडर में आ गया। अब गवर्नमेंट इसका देख रेख, रिपेयरिंग सब कुछ करवाता है। सुबह 8 बजे खुलता है, शाम 6 बजे क्लोज। 1 घंटे बाद फिर ओपन होगा 7 से 10 नाइट में। पहले नहीं खुलता था, अब खुलने लगा, क्योंकि वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हो, जो नाइट को भी देख सकते हैं, जो नाइट के लिए नीचे लाइटिंग व्यवस्था। बैक साइड नीचे लाइट शो होता है, लाइट शो। ऊपर जो लाइटें आपको दिख रहा है, इन लाइटों से यहाँ पे रंग बिरंगी रोशनी देखने को मिलती है। जब लाइट शो स्टार्ट होता है, इन लाइटों से यहाँ पे रंग बिरंगी रोशनी देखने को मिलती है। तो आज भी होगा रात को? एवरीडे, एवरीडे। हाँ, इवनिंग टाइम। और कितने बजे शुरू होता है? 7:30 से 8:30, 8:30 से 9:30, हिंदी और इंग्लिश में। ये तो देखना पड़ेगा आज। देख लीजिए। अब इन्हीं की फैमिली का एक और फोर्ट बनाया, जयगढ़ फोर्ट, आर्मी फोर्ट। इसमें एशिया का सबसे बड़ा तोप रखा गया, जयवान तोप, कैनन, जो फर्स्ट में ट्राई के लिए एक ही बार चला, उसके बाद नहीं चला। तो उसका गोला जाके गिरा था, जयपुर के पास एक विलेज है चाकसू, तो उसका गोला जाके वहाँ गिरा था। उसके गिरने से गहरा गड्ढा, एक तालाब खुद गया था, इतनी क्षमता से गया था। उस किले में जाने के लिए यहाँ से एक सुरंग भी जाता, सीक्रेट टनल, जो आपको आगे दिखाएंगे। यहाँ की लास्ट राजा कौन है, प्रेजेंट टाइम अभी राजा कौन है, आपको आगे दिखाएंगे। ऊपर जो चौकियाँ बनी, इन चौकियों पर रानियों की रक्षा के लिए सुरक्षा गार्ड होते थे, किन्नर, हिजड़े, किन्नर, इन चौकियों पे। ये वो राजा मानसिंह का बेडरूम था, कोने में दिख रहा है सामने मार्बल का, ये वाला। हाँ ये सामने ये बेडरूम था। अब राजा कैसे आया करता था रानियों के पास, हर रूम के लिए चारों तरफ रास्ते बनी हो, सीढ़ी, स्टेप्स। अभी इधर आओ, मैं बताऊँ। राजा का आने का रास्ता होता था, ये बालकनी लग रहा है बाहर, हाँ, हाँ, इधर से आया, गेट है, गेट पर कीलें लग रही है, कील। हाँ, ये पहले पर्दा होता था, राजा आया, पर्दा हटा के सीढ़ी से नीचे इस रानी के पास, इधर जाएगा तो इधर, इधर जाएगा तो इधर, इधर जाएगा तो इधर। किसी लेडीज़ को पता नहीं चला कौन से टाइम राजा कहाँ जा रहा है, क्योंकि लेडीज़ आपस में लड़ती है। अब एक रानी का रूम दिखाता था, चारों तरफ सेम रानियों के रूम है। अभी देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ से एक रानी का पार्ट है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक रानी का पार्ट है।
ऐसे बैक साइड में दूसरा रानी का, ऐसे बैक साइड में दूसरा रानी का। अभी अंदर देख के आ जाओ, रूम वगैरह है सारे, किचन रूम। एक एक रानी का एक एक क्वार्टर है सर। एक क्वार्टर पूरा है। बाप रे। जोधा अकबर मूवी देखी है आपने? जोधा अकबर। जोधा अकबर, हाँ। तलवारबाजी का सिस्टम देगा, तलवारबाजी, हाँ। वो यहीं पे मानसिंह पैलेस का ही है, इधर का ही। अच्छा। आपको टॉयलेट वगैरह जाना है? पानी टॉयलेट नहीं? ये कौन फेंक के गया? किसका रह गया? सापा वापा काफ़ी देर हो गई तो। ये लाइटिंग व्यवस्था है 2013 से, जब से वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हुआ। अच्छा। ये वेजिटेबल कलर है सारा। तो रात को क्या दिखाते हैं? सिर्फ लाइट जलते हैं और लाइट ही जलता है केवल बस। और कोई प्रोग्राम नहीं होता? कोई ये राजा के टाइम में यहाँ से नीचे तक सर्वेंट्स क्वार्टर, जैसे सैनिक वगैरह होते थे ना, हाँ। वो इसी अपार्टमेंट में रहते नीचे तक, यहाँ से लेकर नीचे तक। सीसीडी बाद में बना है, पहले राजा के टाइम में ओनली सर्वेंट्स क्वार्टर था। सीसीडी कैफे के बाद में खुला हुआ है। ये तो मिलता ही है। थोड़ा स्टेप देख के आइए। ठीक है। ये सब दुकान हो गया अभी। ये सब सर्वेंट्स क्वार्टर था पहले। खादी भंडार म्यूजियम था, अब नीचे शिफ्ट कर दिया। हाँ, क्या था पहले? खादी भंडार म्यूजियम था। अच्छा। ये राजाओं की फोटो, किताबें हैं, गायत्री देवी, मानसिंह जी, सबकी अलग। देख लो अंदर जाके। शॉपिंग करने का ज़्यादा शौक नहीं। शॉपिंग नहीं, देखने का। हाँ, एक मिनट रुकिए। ये देखिए राजचुकेन, बोलो। लास्ट राजा है भवानी सिंह, जो सेना में रह चुके हैं। इनको मेडल मिल चुका है, ब्रिगेडियर भवानी सिंह। इनकी रानी है पद्मनी देवी। इनके कोई लड़का नहीं था। ये इनकी लड़की दिया सिंह, जो प्रेजेंट टाइम पॉलिटिक्स में है, सवाई माधोपुर से विधायक एमएलए है। ये लड़की का लड़का इस टाइम जयपुर का राजा है, जो सिटी पैलेस में रहते हैं, पद्मनाभ सिंह। पहले 16 साल का था, अब 18 साल का हो गया। प्रेजेंट टाइम यही लड़के जयपुर के राजा है, जो सिटी पैलेस में रहते हैं, पद्मनाभ सिंह। ये महारानी गायत्री देवी, जो पश्चिम बंगाल की राजकुमारी में, द लास्ट क्वीन ऑफ जयपुर, सबसे सुंदर रानी। सेकंड मान सिंह की 3rd नंबर की वाइफ। ये कूच बिहार की रहने वाली, कूच बिहार, पश्चिम बंगाल। हाँ, अगला साल कुछ भी प्लान करना पड़ेगा। राजा के टाइम में गहने जोड़ली ऐसे संदूक बक्सों में रखते थे, इसका लॉकर है। राजा के टाइम में जितनी भी गहने जोड़ली ऐसे संदूक बक्सों में रखते थे, इसका लॉकर है। ये लॉक है। देखिए, जैसे राजा के टाइम में कोई फाइट होता था, फाइट, तो छुप कर जाने का गुप्त रास्ता हुआ करता था जयगढ़ फोर्ट के लिए। 2.5 किलोमीटर लंबा सुन है, 2.5 किलोमीटर। ये एवरीडे ओपन रहता है 9 से 5 बजे तक। अब क्लोज हो चुका है।
अच्छा, वो जो आपने बोला कि वो दुनिया एशिया का सबसे बड़ा तोप है, हाँ वो इसमें ही है जयगढ़ में। और मालूम है। हाँ, वो तो तोप मतलब क्या, कमान होता है ना। हाँ हाँ कमान। तो किसने बताया कि एशिया का सबसे बड़ा है? वहाँ आप जाके देखे कभी उसके पास? वो क्या इलेक्ट्रॉनिक है, क्या नया बना है नहीं अभी? नहीं, नया नहीं है, पुराना है, वो बिखर गया, टूट गया। वही तो बोल रहा हूँ कि हाँ। पहले वहाँ तोप कैसे बनता था उसका कारखाना भी है वहीं हाँ पे। हाँ, अच्छा। हथियार कैसे बनते थे वहीं पे उसका कारखाना है, लोहे को कैसे गलाया जाता था, सारा भट्टी वगैरह सब बना हुआ पे। आप जाके देखना अच्छी तरह पे। नहीं, वो तो देखना ही पड़ेगा एक बार। क्योंकि एशिया का सबसे बड़ा तोप है, उसको एक ही बार यूज़ किया गया था चलाने के लिए। कितनी क्षमता है, कहाँ तक जा सकती है। ये कड़ा भाई जोधा अकबर मूवी के अंदर ऐश्वर्या के द्वारा खाना बनाती हुई भी दिखाया जाता है। बीच में पानी का मटका जो उल्टा रखा है। 100 लोग, पूरा इंडिया का शादी हो जाएगा। हाँ शादी में काम आएगी। एक बात बताइए ना, ये कढ़ाई क्या पहले का है, ये मूवी के लिए बनाया गया? मूवी के लिए। लेकिन पहले भी ऐसे होते थे, ये तो मूवी का है। पहले का वाला कोई है कहाँ पे है? पहले का सिटी पैलेस और जयगढ़ फोर्ट। और ये क्या है? शॉप है अंदर। अच्छा, सो दिस इज जस्ट अ सिलेंडर। आर्ट वगैरह बनता है उसमें। ये रोबोट है, ये इसका आर्ट गैलरी जो बन रहा है ना ऊपर, हाँ, इसका ये रोबोट स्पाइडर मकड़ी है। ये क्या एक्चुअल रोबोट है? नहीं नहीं। लोहे को बेल्डिंग करके अभी बनाया गया। स्पाइडर मकड़ी अभी का, पहले का कुछ भी नहीं है। सिंदूक बॉक्स, तो वो सिंदूक बॉक्स है, इसमें क्या डिफरेंस है? छोटा है, बिग साइज है। मेरे को तो ये उससे छोटा लग रहा है। ये भी उस टाइम का है या अभी बना गया? टाइम का ही है, उस टाइम का है। लेकिन ये दो थोड़ी थे, काफ़ी थे। काफ़ी थे। ये तो पब्लिक के शो के लिए रखा गया है, टूरिस्ट को देखने के लिए। तो सब सिटी पैलेस। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो टूरिस्ट आता है अभी, ये तो अभी गवर्नमेंट मेंटेन करता है, तो इसका कोई हिस्सा राजबाड़ी को मिलता है? 25% ऑफ ऑल टिकट्स। ये देखिए सामने जेल, राजा के टाइम में यहाँ से वापस पूरा। हाँ बोलिए। ये सर जेल का पार्ट होता था, ये पूरा जेल है यहाँ से वहाँ तक। इसमें एक पानी का कुआं भी, जिसको बोलते हैं टांका पानी का कुआं। हाँ। पहले राजा के टाइम में बरसात का पानी इकट्ठा किया जाता था और पीने के लिए, सेना और प्रजा के लिए साफ करके उसमें से यूज लिया जाता था। यह है यहाँ से वहाँ तक पूरा जेल है वहाँ तक। अच्छा, एक बात बताइए, तो जब मृत्यु दंड देता था तब वो इसके अंदर ही है, कुआं इसके अंदर है, काफ़ी बड़ा है वो। जो मेन गेट दिख रहा है ना, लॉक हो रहा है सामने, वो इसके अंदर है। आगे दिखाएगा हम लोग को? अंदर नहीं जा सकते ना, क्लोज कर दिया। वहाँ पर क्या, वहाँ यहाँ पे तो सूली में नहीं चलाते, वो क्या कुएं में? नहीं ऐसा नहीं होता था, कुएं में नहीं डालते थे। वो कुएं में डालने का सिस्टम है, जयगढ़ फोर्ट है ना, जयगढ़ फोर्ट वहाँ पे, यहाँ नहीं है ऐसा। यहाँ तो पानी का सिस्टम है। नहीं, तो यहाँ पे जो जेल में आदमी रहते थे, हाँ किसी को मान लीजिए कि मृत्युदंड दिया, हाँ, तो कैसे मारते थे उनको? उनको ले जाते थे जयगढ़ फोर्ट उधर। अच्छा, सुरंग से जयगढ़ फोर्ट लेके गए। सो एक्चुअली जयगढ़ फोर्ट जो है वो इन लोग का मेन आर्मी फोर्ट सिक्योरिटी, और ये सब बनाया बीबी लोग के लिए, हनीमून रेजिडेंस। हाँ, ये तो समझ में आ गया। ये पूरा जेल का हिस्सा है। एक मिनट रुकिए, एक जेल का अंदर का फोटो। तोप का गाड़ी, वो होती थी छोटी बड़ी तोप। हाँ। तो ये तोप को गाड़ी पे रखकर ऑक्सफोर्ड घोड़ों के द्वारा जोत के ले जाए। जितना भी तोप होता है गाड़ी पे रखकर ऑक्सफोर्ड घोड़ों के द्वारा जोत के लाए, तोप का गाड़ी। हाथी से नहीं ले जाता? किसी भी ले जा, लेकिन ये छोटी मोटी तोप होती थी उसको। ये क्या है अंदर? ये जेल था पहले, अभी जैसे गवर्नमेंट कर्मचारी वगैरह यूज लेते हैं इसको।
ऑफिस बना दिया, सफाई में सफाई कर्मचारी वगैरह बैठते हैं ना, अच्छा अच्छा। गवर्नमेंट के काम है। So 25% goes to the Raj Parivar till now. That was one information I wanted. सर मैं जितना मेरे दिल में था सभी पूछ गया हूँ। अच्छा एक बात बताइए तो मेरे को, ये जितना जो फोर्ट है ये सब फोर्ट इतना ऊंचा ऊंचा क्यों बना था पहाड़ के ऊपर? इसलिए बनाया गया जैसे नीचे भी बना सकते थे, ऊपर इसलिए बनाया जाता है या कोई दुश्मन वगैरह कोई भी नहीं पहुंच सके। लेकिन वो तो साधारण प्रजा तो नीचे रहता है, प्रजा नीचे गांव में इधर बैक साइड गांव में था, तो वो तो आके तो प्रजा को मार देगा। नहीं ऊपर वहाँ पे सिक्योरिटी है ना, सामने ड्रम्स वगैरह बजते थे, सामने दिख रहा है ना वॉच टावर, हाँ उनके पे सारे गेट वगैरह क्लोज होते थे, वहाँ से जैसे कोई दिखता था ड्रम्स वगैरह बजा के राजा को मैसेज करते थे पहले। अच्छा ये होता था, ऐसे थोड़ी है। और अपने आपके सिक्योरिटी के लिए उन्होंने जब फोर्ट बनाया सब ऊपर बनाया। अब एक बात बताइए तो मेरे को बांधवगढ़ का भानगढ़ भूतों का भानगढ़, हाँ उसका गाइड मेरे को बता नहीं पाया। मैं उनको पूछा कि ये तो जंगल के अंदर है, ठीक है, यहाँ पे तो कोई आएगा भी नहीं, तो यहाँ पे इतना फोर्ट बड़ा बनाने का जरूरत क्या? फोर्ट का है वो तो छोटे मोटे खंडर बने हुए, छोटी नहीं वो 1600 साल पूरा, ये तो इससे भी पुराना है। ये कितना साल बोला आपने? 400 साल पुराना है। हाँ 1700। राजा महाराजा नीचे रहते थे, नीचे। अच्छा कहाँ पे दिखा दे? 3 जगह चेंज कर दी उन्होंने, फर्स्ट सेकंड थर्ड सिटी पैलेस। अच्छा अभी सिटी में ही रहता है। और क्या भाई, काम धंधा ढूंढना नहीं पड़ता, राजा घर में जन्म हो गया, आपके जैसा भी नहीं है, मेरा जैसा भी नहीं है। पीछे बाउंड्री वॉल बताया था आपको। हाँ रुकिए, ये लाइट जल गया अभी। ये राजा महाराजा को जोधा का बर्थ पैलेस, सामने देखिए इधर, किधर? ये सामने दिख रहा है बड़ा सारा, ये बड़ा सारा जोधा का बर्थ पैलेस, ये वाला। और यहाँ से आए राजा महाराजा इधर आमेर किले में, फिर चले गए सिटी पैलेस। अच्छा, और ये हो गया आपका वॉच टावर। अभी कोई नहीं रहता, कोई नहीं रहता। ये कैमरा अच्छा है ना? इस गांव में 365 मंदिर है, 365 मंदिर पूरे आमेर गांव में। अच्छा, एक अकबरी मस्जिद, अकबर जब भी अजमेर जाया करते यहीं से नमाज पढ़ के जाया। ये आर्मी फोर्ट, ये आर्मी फोर्ट है, जयगढ़ फोर्ट, उस सीक्रेट टनल वाला रास्ता यहीं पे जाता है। तो ये जयगढ़ फोर्ट, जहाँ पे तोप है। इससे आगे एक और फोर्ट है नाहरगढ़ फोर्ट, नाहरगढ़ तो गए हैं मैंने, टाइगर फोर्ट। तो आने में बहुत तो टाइम ज़्यादा लगा। कहाँ से पैदल आए थे क्या? नहीं, अब मैं तो नाहरगढ़ से निकल के यहाँ आया। गाड़ी से? कहीं से? ऑटो से। अच्छा। तो वो रास्ता घूम के आना पड़ता है। अब उसमें घुमा हुआ, उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। शॉर्टकट है इधर, पैदल बाई वॉक 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर लगभग। तो इस गांव में 365 मंदिर है, एक अकबरी मस्जिद। अकबर जब भी अजमेर जाया करते यहीं से नमाज पढ़ के जाया करते थे, यहीं पे। सामने जो टेंपल आप लोग पहाड़ी में देख रहे हैं, बड़ा टेंपल, वो जो दिखाई दे रहा है, बद्रीनाथ जी का मंदिर है। बद्रीनाथ जी का, बद्रीनाथ जी, वो बद्रीनाथ जी का ये वाला, ये सामने यही टेंपल, ये हाँ। नीचे एक और टेंपल दिख रहा है सामने, जस्ट ही नीचे। हाँ, ये मीरा कृष्ण टेंपल, यही है मीरा कृष्ण टेंपल, जो वर्ल्ड में एक ही टेंपल है, कहीं पर भी नहीं है। मीरा कृष्ण राधा कृष्ण टेंपल आपको जरूर मिलेगा, लेकिन मीरा कृष्ण मात्र आमेर में है, जो भूल भुलैया मूवी का शूटिंग हुआ था, भूल भुलैया। हाँ, जैसे पुष्कर अजमेर में ना ब्रह्मा जी का मंदिर, वैसे एकमात्र मंदिर यहीं पर ही है, मीरा कृष्ण। अब यह आपका पूरा हो गया। चलिए बाहर चलते हैं, तो सिगरेट भी पीना है एक। बाप रे, अब तक सिगरेट नहीं पिया। मंदिर आप दर्शन करना चाहिए तो कर सकते हैं। देखिए, राजस्थान में आया हूँ किला देखने के लिए, मंदिर दर्शन करने का दिमाग में जब जाऊँगा
तो उसका दिमाग लेके जाऊंगा. This is awesome view I am getting at night. The lights are on. The moon is shining over there, nearly the full moon. I just want to take a small round across me. Only problem is too many people shouting, making noise. So I'm walking down now. Really successful day, I must admit. Walking down in the light of the palace. ओ बाहर इधर से पैदल या गाड़ी से? गाड़ी लेके sky not blue but awesome view. Going down from sky also. क्या कोई शोरूम वगैरह देख रहे थे क्या? नहीं मैं तो शोरूम नहीं आपको वो तो आपके साथ जाऊंगा बोले. ब्यूटीफुल इसका यहाँ पे फोटो ले. हाँ जरूर आप ऐसे करो. The hill abode of eagles. It belongs to the Meena tribe. No, Sarup ji, no. It used to belong to them. Peshwa has lost no time in defeating the local Meena tribe and laying the foundations of their new capital in Amer. It is believed that Raja Kankildev constructed a fort atop this hill called Kankilgarh and established the Ambikeshwar temple, from where Amer derives its name. But local folklore suggests that Amer was named after the goddess Amba Mata, who was worshipped by the Meena tribe. Tales and legends are always more intriguing than facts. And so it is also said that Raja Kankildev's father, Dule Rai, is none other than Dhola Rai of the famous love fable Dhola Maru, which still resounds widely in Rajasthan.
With the establishment of the capital, the foundation of a new fort was also laid. That marked the beginning of a 700-year rule of the Kachwaha dynasty from this very fort of Amer. In the early age of bow and arrow, the fort walls stood low. But the coming of gunpowder and increasing use of guns raised the height of the walls considerably. The walls cast in stone were also cast in poetry. Many poets of the time sang in praise of Amer, describing the beauty, royalty, and valor of the Rajputs. पहुंचत भो आमेर में हुकुम भूप जैसा ही महल चील ठौरा बने बासर उत्तम माही जय गढ़ता को नाऊंगे भाशिव फेरी नरेश करनी अधिकाई जिते बरनी जाति न शेष. The Rajputs not only wielded the blade in the battlefield, but also walked admirably on the blade of love. तलवार से वो घायल करे, नैन से घायल हुए, तेग और भाले सब सहे, बैन से घायल हुए. With every new ruler, the fort was extended, expanded, and adorned further. The Kachwahas were not just able warriors, but efficient administrators and strategists as well, maintaining cordial relations with other rulers through diplomacy, friendship, and royal exchanges. Over the centuries, their contribution to India's flourishing riches, traditions, and culture has been significant. Stories of India's great wealth and treasures reached far and wide. As a result, many invaders headed here to pillage and plunder the great land, marking the beginning of a new chapter in India's history. Persians, Greeks, Scythians, Huns, Turks, Mongols, Afghans, they all came to invade the country, but none could establish a base, and they soon retreated, but with caravans full of wealth. One invader followed another, Khilji, Tughlaq, Lodi. They came, they ruled, but were eventually ousted by the native rulers. Meanwhile, India stood unbeatable. Her customs, traditions, culture, digging deeper roots and grounding her even more. With the arrival of the Mughals in the 16th century, history turned a new page. India had never been so vulnerable, timorous, anxious, and yet acquiescent. In 1526, Mughal Emperor Babur met Ibrahim Lodi in the battlefield of Panipat. This fierce war was witness to an innovative facet, the use of cannons and guns by the invaders. The blasts created a complete frenzy amongst the elephants in the Lodi army, and Babur emerged victorious. This indeed was a landmark victory, after which the Mughals seemed unassailable as they advanced. Even today, if you turn and look back over your right shoulder, you will see the terror of the approaching Mughal army. As Babur led his army towards Rajasthan with rising confidence, Rana Sangha of Mewar and Prithviraj of Amer, along with many other Rajput kings, formed a common army.
17th March 1527. The Mughal army confronted this grand multitude of Rajput soldiers in the fields of Khanwa. Babur had heard many tales of the glory of the Rajput men he now faced. In the mortal danger of a defeat, he hesitated at first, but called upon his soldiers to muster courage for one final effort, for that last drop of sweat and blood, the ultimate battle, and was rewarded with the sweet smell of victory, which finally established the Mughal rule in India. King Prithviraj of Amer was married to Balabai, a greatly revered woman in Rajasthan and an ardent devotee of Lord Krishna, who was given the stature of Meera. The royal women of the Kachwaha court were highly influential and have been known to infuse religious and spiritual beliefs in many of their king husbands. During this period, foundations of numerous temples were laid in Amer, each dedicated to a different deity and built by a different ruler. Just as day fell to night, and night awoke to another beautiful dawn, eras in history came and went. In the 16th and the 17th century, India was awash with a wave of religious and spiritual sentiments. In the northern state of Punjab, one could hear the voice of Sikh Guru Nanak. गगन में थाले रव चंद दीपक बने तार कमंडल जनक मोती धूप माल आन लो पवन डमरो करे सकल बन राए बुलंद ज्योति कैसी आरती कैसी आरती हुई अवखंडना तेरी आरती अनहता सबद वाजंत तेरी कैसी आरती हुई अवखंडना तेरी आरती. The epic Ramayana inspired Tulsidas in Banaras to pen Ramcharitmanas. रघुकुल रीत सदा चले आई प्राण जाए पर वचन न जाए. In Rajasthan, Rahim and Raskhan recited couplets in the Braj language, and the land echoed with the music of Ravidas and Meera. The air was filled with love, peace, and harmony. With Mughals consolidating their position in India, a new era of the Ganga-Jamuni Tehzeeb emerged, a synthesis of Hindu and Islamic practices of art and culture. रंग डाली मोरी ऐसी चुनर रंग ओ मैं जाऊं भाई
Emperor Akbar ascended the Mughal throne, he expressed his desire to form military alliances with all Rajput kings. Taking a cue, Raja Bharmal of Amer approached his loyal friend Majnu Khan, one of the commanders of Emperor Akbar, to arrange a meeting. Jahanpana, I take pleasure in introducing to you Raja Bharmal of Amer, chief ruler of the Kachwaha dynasty of Rajputs, known for his humility, nobility and valor. It has been his heartfelt desire to walk in your shadow and offer allegiance to the mighty emperor. The great Emperor Babur had mentioned in his memoirs that if the desire to rule over India is to be successfully fulfilled, it stands imperative to respect and regard the traditions, culture, and sentiments of every clan, sect, or tribe of the nation without interference or intrusion. It is our desire to follow the same principles. Very well. Raja Bharmal, I am pleased to see you, and I welcome you to our humble quarters. And what is it that we can do for you? Jahanpana, my only wish is to offer my dear daughter's hand in marriage to you. Bowing my head before my sword, I vow to serve in the defense of you, your family, and your rule. We are convinced of your loyalty, allegiance, and fidelity, Raja Bharmal, and we are delighted to accept the offer for marriage. Your daughter shall now be known as Malika-e-Azam, the Queen of the Empire. 6th February 1562. The city of Sambhar. Mughal Emperor Akbar and the daughter of the Rajput king Raja Bharmal, Harkabai, tied the conjugal knot according to Hindu traditions. The city came alive with the vibrant colors of Rajasthan, resounding with myriad folk songs and the Ghumar dance. This was the first pact between the Kachwaha dynasty and the Mughal rule, paving the way for many more. And born from this alliance was the Rajput Mughal prince Jahangir. Jahangir later took to the throne and marked an important place for himself in the history of India. In the true spirit of the Ganga Jamuni Tehzeeb, conceived by Emperor Babur, Akbar's court not only observed the Muslim festival of Eid with great fervor, but also celebrated Hindu festivals like Janmashtami, Deepavali, Dashera, and Holi, all with the same zeal and passion. Bhakti sagar hai, 14 bhuvan mein ujagar hai, ye kokil bani, sadanand kishori, mrignani mahima pyari, ye chandra badani, sadanand kishori, ab to daras dikha jari. Ram tum tana
पार रे सगरिये अपने गई द्वार पार रे. On his return from Sanganer, the emperor took Raja Bharmal's son Man Singh along with him. Despite being a Rajput, Man Singh soon gained recognition as one of the Navratna, or 9 jewels of the Mughal court, and was also made the commander-in-chief of the army. Man Singh was a learned man, a keen scholar of Sanskrit, Persian, Rajasthani and Hindi. When this palace of Amer was founded in 1599, Man Singh not only promoted and encouraged the art and crafts here, but also took it upon himself to bridge the disparity between men and women. The royal women were now allowed to partake in the festivities and celebrations of the imperial quarters. Many rulers accepted sovereignty of the Mughal Empire. Rana Pratap of Mewar, however, was too sanctimonious. Emperor Akbar gave Man Singh the responsibility to persuade Rana Pratap to follow suit. Man Singh had invited himself to the Mewar court for a feast. This was unusual, more so an extraordinary circumvention of protocol. But the Rana accepted. It was against Rajput hospitality to not welcome a guest. And although he received Man Singh with great honor and elaborate arrangements, on the pretext of a headache, Rana Pratap refused to dine with him. Insulted, Man Singh rose from his seat and said, I can always recommend a treatment for his headache, but I have no cure for this misdemeanor. If he has forgotten how to respectfully welcome a guest into his house, he could have at least conducted the meal with honor. Rajputs have always been known to weave around idiosyncrasy. They may be quick to anger, but regard respect, pride and honor as most definitive virtues. So Man Singh took a few grains of rice from his platter and tying them within the folds of his turban, said, I do not wish to disrespect the god of victuals by leaving this food untouched. And yet, I do not wish to consume it. Hence, I clutch these grains to take back with me. I shall neither forget nor forgive the impertinence I have been shown today. Rana, I am bound by kinship on one hand and duty on the other. And on both accounts, my desire was only to settle matters without any carnage. But today's misconduct shall be remembered, Rana, and you will have to pay for this. You yourself will have to face me. Rana Pratap's reply was distinct and stern. Raja Man Singh, face I shall, but in the battlefield. Emperor Akbar's arrogance, Rana Pratap's pride, and Man Singh's duty. Consequence, the Battle of Haldi Ghati in 1576. The commander-in-chief of the Mughal army was the Hindu ruler Man Singh, who came face to face with Hakim Khan Sur, a Muslim general of the Hindu state of Mewar. The armies were bold, the battle was fierce, and fortunes were being written in sand.
first favoring one faction and, in the next instance, the other. Sensing the Mughal army's bid to surround and immobilize Rana Pratap, the Rajput army manipulated his escape on his loyal horse to a secure distance. Pratap lost all territory, and yet won in the face of defeat, for he had not been captured. Wherever there were cries of discontent and revolts in the Mughal Empire, Akbar would commission Man Singh to lead the Mughal army to suppress these uprisings. Yusuf Chagatai, along with many other tribe leaders, mutinied against the mighty empire. But Man Singh was able to overpower them, hoisting the Mughal flag even higher. On one such mission, Man Singh's army was trekking through the frigid mountains in the north, en route to Kabul and Kandahar, and River Indus near Attock was swelling with icy rapids. Some soldiers hesitated, believing that crossing the river into foreign land would result in inauspicious fate. Man Singh came to the front and recited a couplet. All land belongs to one deity. Where is the hindrance in that? But they who have hindrance in their souls are hindered. समय भूमि को पाल की या मैं अटक कहा जाके मन में अटक है सोई अटक रहा. All apprehensions disappeared, and the soldiers leapt across the raging river on their horses. Was long and tedious, and it took Man Singh 6 years to achieve the pennant of victory. At the end of the battle, Manohar Das, the chief of Samod, took the flags of the 5 defeated rebel clans and placed them in Man Singh's hands. Combining the colors of these 5 flags, red, white, yellow, green and blue, Man Singh established the flag of Amer. This flag continued to adorn Jaipur till the Indian tricolour was instituted. As the governor of Bengal, Man Singh defeated the Raja of Jishore and returned with the idol of goddess Shila Devi, establishing her in a temple within the fort. She was worshipped with great reverence in the royal family, and even today, people from across the country throng here to pay their respects. After Man Singh, Mirza Raja Jai Singh succeeded the throne of Amer at the mere age of 10. He kept alive the embers of the Kachwaha dynasty. He constructed the famous Diwan-e-Am court with expert and skilled craftsmanship, perfectly blending Hindu and Islamic architecture, decorated with unmatched ornate carvings. Even today, it stands as an evidence of consummate pride, honor, and reverence of the Kachwaha dynasty. The court not only echoed the sounds of proficient administration, but one would also often hear couplets recited by the famous poet Bihari Lal. And for each couplet presented in the court, he would receive a piece of gold. The rose, your highness, is not yet in bloom. It has neither honey nor pollen. If just a bud makes a king forget himself, what will happen when the rose blossoms? Nahi parag, nahi madhur madhu, nahi vikas ihkal. Ali kali hi so bandhyo, aage kaun hawa. During the reign of Emperor Aurangzeb, the Marathas, a strong Deccan clan known for their tactical warfare,
were gradually escalating attacks on Delhi and Rajasthan. When Aurangzeb's army failed to capture the Maratha warrior Shivaji, the emperor commissioned Mirza Raja Jai Singh to engage him. Jai Singh cornered Shivaji in Purandar and persuaded him to negotiate. An alliance was drawn between Shivaji and the Mughals, wherein many forts and constituencies were distributed amongst them, and it was also agreed that the Maratha warrior would soon be presented in court before Emperor Aurangzeb. Mirza Raja Jai Singh was unable to attend the court, but gave charge to his son Ram Singh to ensure the comfort, safety and dignity of Shivaji, and also requested Aurangzeb to honor this promise with stately magnitude. When Shivaji came into the Mughal court, he was slapped with a meager rank, much lower than his contemporaries. He was enraged by this insult, and facing the entire court, he addressed Mirza Raja Jai Singh's son, Ram Singh. Your father gave me his word that I would be shown full respect and deference in this court. Is this Rajput honor? Is this Mughal honor? My workers and servants get a mansab of 5,000, and that is what has been granted to me. I have been deemed even below the likes of your Jaswant Singh, whom I have repeatedly defeated in the battlefield. Shivaji was infuriated, livid. Aurangzeb asked Ram Singh, What's the matter, Ram Singh? What complaints does he bring? Jahapana, please do not bother yourself with these trivial matters. The Maratha king is used to different customs. He is not familiar with the ways of our court. Take him with you and see that he is taken care of. Ram Singh tried to plead with Shivaji, but he was adamant. Despondent with the consequences, many courtiers carried complaints against him to the emperor. It eventually became an open secret that Shivaji would be sent. When Ram Singh heard the news, he was reminded of his father's promise. He facilitated Shivaji's escape to Agra, who roamed through thick jungles disguised as an innocent saint. 12th September 1666. On reaching the fort of Raigad, Shivaji's mother Jijabai celebrated the arrival of her son by declaring his coronation. The fort of Raigad exploded with song, dance and merriment. Aurangzeb suspected the hand of Mirza Raja Jai Singh in Shivaji's escape from prison, but he had to suppress his anger, for it was of utmost importance to maintain jovial relations with Amer. And therefore, when in 1700 Mirza Raja Jai Singh's grandson Jai Singh II took the throne at the mere age of 12, the Mughal emperor bestowed upon him the title of Raja, along with other territorial and financial privileges. Hearing about Jai Singh's bravery in the battlefield, Aurangzeb dismissed all past acrimony, took the young Jai Singh's hands in his, and said, You're in my grip. Tell me, what can you do now? Jahapana, I can do everything. At the time of matrimony, the man holds his bride's one hand and promises her the world, to be with her and protect her for life. You have embraced both my hands in yours. What else could I ask for? All my prayers have been answered. Subhanallah. You are witty and clever. You truly are a sawai, more than others. People cross these fleeting dunes, embedding their footprints in the sand, only to find even the slightest breeze sweeps these trails off the surface of this enchanting land. As the desert turns into another unrecognizable face, what seemed like only a moment turned history to a new page. The death of Aurangzeb in 1707 led to a Mughal war of succession. While the Mughals were slowly losing their stronghold on one hand, the attacks by the Marathas were steadily increasing. Through sheer diplomacy and foresight, supported by a large army, Raja Savai Jai Singh became the most formidable ruler in northern India.
All the other Rajas now turned to him for protection and the promotion of their interests at the imperial court. Raja Savai Jai Singh was a visionary man, far-sighted and meticulous. With Amer now bursting at its seams with people and the Raja's idea to make his capital a new trade center, Savai Jai Singh decided to shift the Kachwaha capital out of the historic city of Amer. 18th November 1727, a new city was established, named after the king himself, Jaipur. With his far-sightedness and scrupulous thoughts, he made the first planned city of India, designed on a grid system. Till date, it stands with pride and honor as one of the most important sites in North India and one of its three great jewels. Savai Jai Singh was the first Hindu ruler in centuries to perform ancient Vedic ceremonies, promote Sanskrit learning, and initiate reforms in the Hindu society, such as the abolition of sati. It was at Jai Singh's insistence that many taxes, especially those levied on Hindus by Mughals, were abolished. In 1719, a noisy discussion in the court of Mughal Emperor Muhammad Shah Rangila prompted Raja Savai Jai Singh to ponder on the subject of astronomy. Greatly influenced by ancient Indian sciences as well as developments in the Western world, he invited many scholars to India, from whom he learnt and honed his own skills in mathematics and astronomy. He built 5 astronomical observatories across North India, in Delhi, Jaipur, Ujjain, Varanasi and Mathura, which are today popularly known as Jantar Mantar. It is surprising that in the midst of local wars, foreign invasions and consequent turmoil, Savai Jai Singh found the time and energy to build astronomical observatories. It would not be out of context to say that 300 years ago, Raja Savai Jai Singh laid the foundations of a modern India. Pandit Jawaharlal Nehru wrote about him in The Discovery of India. Jai Singh would have been a remarkable man anywhere and at any time. The fact that he rose and functioned as a scientist in the typically feudal milieu of Rajputana and during one of the darkest periods of Indian history when disruption and war and tumults filled the scene is very significant. With the establishment of the new capital at Jaipur, Amer's splendor and grandeur began to wane. Finally, after 600 years, did she get the chance to lay back in repose. But the constant attacks by the Marathas would jolt and wake her from deep sleep. The royal treasures were no longer safe. The Kachwaha fortune was not only threatened by foreign invaders, but there were many conniving minds here as well. Raja Savai Jai Singh needed a new fort to keep the state's wealth secure. And so, in 1734, the foundations were laid for Nahargarh. Constructed closer to Jaipur, Nahargarh became like a brother keeping a watch on his sibling, Jaipur. As Jaipur grew out of adolescence, Amer came to play the role of the revered forebear. Lost in the quiet of the surrounding hills, misty clouds, sweeping winds, Amer reminisced her youth, bringing back memories of the forgotten days. Suraj Bol, facing the sun, inviting its warmth and invoking its blessings. This large entryway kept the land of the Suryavanshis flourishing with happiness and wealth. Chand Bol, facing the moon as it climbed through the dark western skies. This gateway overlooked the main city, forming a direct passageway to the old palace. Divan-e-Aam, built as the public hall of audience, was constantly heaving with people and brimming with noblemen.
and never failed to welcome its king with extreme stateliness and opulence. Ganeshpur, the provider of prosperity and the destroyer of obstacles, Ganesh kept his doors ajar and blessed all those who sought comfort within the palace walls. Diwan-e-Khas, the hall of private audience, plastered in a mosaic of reflective glass, this palace of mirrors would shimmer to life by lighting a single lamp. Baradari, this open court would be teeming with princesses, maids, musicians, dancers, and painters who would often congregate within the central pavilion to celebrate festivals and holidays. And the path on the left leads you to Jayagarh, which stood majestically over the palace of Amer. Lamps were lit within the Diva Burj, the cylindrical watchtower, and could be seen from miles away, navigating men back home in the dark of the desert night. And for Amer's security, the world's largest movable cannon, Jaivan, was commissioned to be built there. So long was its barrel, and so powerful was its range, that once fired, it would be heard miles away. Holding on to past culture, tradition, and customs, Amer was fading into a stupor. Cracking plaster on the fort walls could be repaired. But as one government gave way to another, the loneliness Amer felt was never realized. The temples thrived with prayers and processions, but the Kachwaha royalty limited itself only to the new bounds it had created, Jaipur. 2 centuries went by. Jaipur was witness to everything: the British rule, the fight for independence, even freedom. But Amer was still standing afar, watching Jaipur like a distant relative, and she wept unspoken tears within. How long could this melancholy remain unnoticed? Eventually, India claimed her autonomy. She was free and independent. But Amer still waited in the hope that someone would remember her too. And she was remembered. In 1954, Amer's doors were finally thrown ajar for the public. होंगे राजे राजकुंवर हम, बिगड़े दिल शहजादे, बिगड़े दिल शहजादे, हम सिंहासन पर जा बैठे, जब जब करे इरादे, जब जब करे इरादे. Amer now belonged to the people, and the people belonged to Amer. हिंदुस्तान की सतरंगी दस्तार है राजस्थान. हिंदुस्तान की सतरंगी दस्तार है राजस्थान. सदियों लंबा साफा इसका, सदियों लंबा साफा इसका, पंचरंगी पहचान. पधारो राजस्थान, पधारो राजस्थान, पधारो राजस्थान, पधारो राजस्थान. इतिहास यहाँ पर बुर्जी बुर्जी खड़ा हुआ है. इतिहास यहाँ पर बुर्जी बुर्जी खड़ा हुआ है. आकाश पे इसके
होती है। रात को जब पुरवाई आकर आंचल फेरती है। करवट लेकर सो जाता है, करवट लेकर सो जाता है पूरा रेगिस्तान। पधारो राजस्थान, पधारो राजस्थान, पधारो राजस्थान, पधारो राजस्थान। घूमर जी रटराई मामारी, घूमर जी रटराई माँ। घूमर रमवा में जाशा रजनी, घूमर रमवा में जाशा। लहू से लिखी जगह जगह तहरीरें रखी है। लहू से लिखी जगह जगह तहरीरें रखी है। दरवाजों दीवारों पर तस्वीरें रखी है। मोड़ मोड़ पर लोक कथाएं रास्ता रोकती है। मोड़ मोड़ पर लोक कथाएं रास्ता रोकती है। पोथी खोलो तो खुलते हैं, हो पोथी खोलो तो खुलते हैं वीरों के बलिदान। पधारो राजस्थान, पधारो राजस्थान, पधारो राजस्थान, पधारो राजस्थान। हिंदुस्तान की सतरंगी दस्तान है ये राजस्थान। सदियों लंबा सफर इसका, सदियों लंबा साफा इसका बजरंगी पहचान। पधारो राजस्थान, पधारो राजस्थान, पधारो राजस्थान, पधारो राजस्थान, पधारो राजस्थान। होटल से पहले ही पड़ेगा वो, होटल में कोई चिंता नहीं है। नहीं नहीं चिंता, दूसरा बात का मेरा मोबाइल का बैटरी ख़त्म हो गया। अच्छा ठीक है, हाँ और ये मेरे को अपलोड करना है। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। After a really tiring day, and did everything I wanted actually, and now the camera is nearly out of charge as well as my mobile, so I have to first offload the stuff at hotel, and I'm keeping the camera just while going. Maybe I will just take a photo of Jal Mahal, one photo or two photos, that's it. And shopping. And shopping, yeah, shopping. Hotel se nikal ke karna. I thought the trip is over. I'm bloody tired. But what I'm going to do now, I'm coming to see the Jal Mahal, which we missed during the day. So it is a palace of the Queens during summer, I think, if I'm not mistaken. भाई साहब जी 2 मिनट बोलिएगा, क्या है इसका थोड़ा हिस्ट्री आप सब बता दीजिए ना। बोलिए रिकॉर्डिंग हो रहा है। ये जलमेल है, हाँ वो जलमेल पैलेस बोलते हैं। हाँ राजा मानसिंह ने बनाया हुआ है। ये 7 मंजिल का है। अभी आपको 3 मिल दिख रहा है, 3 पानी में 3 मिट्टी में दबा है। तो ये जल पानी के अंदर क्यों बना? राजा मानसिंह ने बनवाया था मुगलों के ज़माने में। पहले के ज़माने में लाइटें तो वगैरह नहीं करती थी। गर्मियों में 6 महीने राजा यहाँ बिताने आया करते थे। ऐसे काम करते, ऐसे काम करते। तो अंदर इतनी आज भी इतनी ठंडी हवा चलती है, उसके आगे ऐसी पहले इसलिए पानी भी बनाया था। पहले जंगल पूरा खाली रही है, पहले पानी का पता। हवा महल और जल महल एक ही राजा ने बनाया था और एक ही कारीगर ने बनाया था। इस सुरंग में पूरी हवा में जाती है। कहाँ पे जाती है? सिटी पैलेस। पूरे यहाँ से भाग जाते। राजा महाराजा आते थे तो गर्मियों में घोड़े द्वारा रात में इधर ही आते थे, ये शिकार वगैरह करते थे।
छत्तीसगढ़ यहाँ पे 4.5 रूम है इसके अंदर, लेटिंग बाथ सब कुछ बनाओ, सारी चीज़ बनी है इसके अंदर, पूरा बना हुआ है। तो अभी वहाँ जा नहीं सकते, अभी नहीं जा नहीं सकते, लीज पे दे दिया, लीज पे दे दिया। पहले हम पहले सरकारी था, पहले हम अब प्राइवेट पे दे दिया, लीज पे 2 दिन को छोटे छोटे थे तो उसमें खेती करते अंदर पानी में। हाँ खेती करते पहले खाली था, पहले पता पानी नहीं था। इस महीने में पूरी खेती करते, पूरी बाजरा गंवार जमार सब होता हमारे। अब बनने पानी होने वाले इसको गिरा कर दिया, इसे खानी है ये। थैंक यू दादा, ठीक है, थैंक यू दादा। Really looks beautiful inside the okay, so it's done. I'm on my way to the hotel finally. So this is basically the Jal Mahal. Last one, walking on the street beside the auto. ऑटो कहाँ गया? So I'm in the station now. It's very easy really going a hectic journey, but the train is nearly 40 minutes late and the platform is packed. So yep, but it was आ गई गाड़ी. अरे बाप रे, lucky I should have started the recording earlier.